Jai Hind officer, today we will discuss ND2 2024 Mathematics paper solution. So let's start. Set E का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया था, let X be a matrix of order 3 cross 3, Y be a matrix of order 2 cross 3 and Z be a matrix of order 3 cross 2. So which of the following statement are correct? So first statement में mention किया गया है ZY X is defined and is a square matrix of order 3. Similarly, statement second, Y XZ is defined and is a square matrix of order 2. And statement third, X YZ is not defined. So let's check with our solution part. So according to solution, ZY multiplication is possible with X. So our statement number first is correct. Now, if we multiply XZ, this is also correct with Y. So statement 2 is also correct. But if we talk about statement number third, YZ multiplication possible हो रहा है, but if we multiply X with YZ is not possible. So that's why our third statement is also correct. So according to our solution, first statement, second statement and third statement both all are correct. So option D is correct. Now comes to question number second. Question number second में आपको दिया हुआ है statement first, the set of all irrational number between root 15 and root 12 is an infinite set. Statement second में mention किया गया है the set of all odd integers less than 1000 is a finite set. तो आपको इसका solution पे check करेंगे तो आपको दिया हुआ है there are infinite irrational number between two irrational numbers. So आपको question में root 12 और root 15 two irrational number is given. So as we know that there are infinite irrational number between two irrational number, so statement first is correct. Now comes to statement second. The set of all integer less than 1000 is a finite set. So this statement is not a correct statement because there are infinite numbers of integers less than 1000. So your second statement is false. So according to our solution, option A will be correct for this question. Now comes to question number third. Question number third में पूछा है आपसे how many 4-digit numbers are there having all digits are as odd. So if all digit as odd, so we can consider repetitions of digits are allowed. So there are 5 digits odd number 1, 3, 5, 7 and 9. So total number of ways can be 5 raised to 4 because repetition of digits are allowed. So 5 raised to 4 is equals to 625. So according to that, our option A would be correct for this question. Now comes to question number 4. Question number 4, if omega is a cube root of unity, then what is 1 plus omega minus omega square raised to 100 plus 1 minus omega plus omega square raised to 100 is equals to? If we talk about solution of this question, we need to remember only 3 things. Number first, 1 plus omega square equals to 0. This is the standard result we need to remember. Same as यदि हम यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू इस स्टेटमेंट से फाइंड आउट करेंगे, वी गेट माइनस ओमेगा स्क्वायर. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगा आपका माइनस ओमेगा. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1. इफ वी पुट दीज वैल्यूज in our question, finally what we get minus 2 raised to 100, which means option D will satisfy this question. Now comes to next question. Question number 5. Let A and B be two square matrices of same order. If AB is a null matrix, then which one of the following is correct? Both A and B are null matrix. Either A or B is a null matrix,
option C, B is a null matrix if A is a non-singular matrix, and option D, both A and B are singular matrix. So मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए मैंने दो matrices चूज किए, let A is equals to 0 1 0 0 and B 1 0 0 0. यदि मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया सो वी गेट अ नल मैट्रिक्स, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन A is singular matrix. If we find determinant of A, we get 0, same as for determinant B. So according to question, only statement B will satisfy this answer because AB is a null matrix as well as both A and B are singular matrix. Now comes to next question. In next question, in the expansion of 1 plus x raised to p and 1 plus x raised to q. इस क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 35 दिया है, आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ p प्लस q. इस क्वेश्चन में यदि हम 1 प्लस एक्स रेज टू p और 1 प्लस एक्स रेज टू q में बेसिक एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सो फाइनली बिकॉज योर बेस इज सेम, so we can easily add your power. So 1 plus x raised to p plus q. So according to question, x cube का coefficient is 35. So we can write p plus q c3 is equals to 35. यदि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाएंगे तो it will take more time. But if we check with our option, so according to option, only C option will satisfy. If we put p plus q, value is 7, we get 7c3, and we know that how to solve 7c3 value. 7c3 value will give 35. So option number C will satisfy this question. Now comes to question number 7. If p times the pth term of an AP is equal to q times the qth term, then what is the p plus qth term equals to? मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करना चाहूंगा इस क्वेश्चन के थ्रू. ये क्वेश्चन एज इट इज आपके 2010 के फर्स्ट अटेम्प्ट में पूछा गया था. सो दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्ट रिजल्ट, सो यू कैन नोट डाउन इफ p times of pth term is equals to q times of qth term, then we can remember p plus qth term would be 0. So option A is correct. So if you know this direct result for this statement, this question is your 0-minute question. You can direct consider as option A. Now comes to another question. Next question is, let p is equals to ln x, q is equals to ln x cube, and r is equals to ln x raised to 5. Which of the following statement is are correct? फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है P, Q, R are in AP. So we know that if 3 terms are in AP, so your twice of middle term is equals to first and last term. So if we put value of P, Q and R, our first statement would be correct. But if we talk about statement second, PQR can never be a GP. So we know that PQR in GP, so your square of middle term is equals to product of first and last term. But this will not satisfy our second relation. So according to our solution, both first and second statement is correct. So option C will satisfy this answer. Now comes to next question. Z is 1 by 3 determinant is equals to x plus iy. Then what is the modulus of z? So modulus of z is basically under root x square plus y square. So if we solve this matrix, this determinant, we get 1 plus I. So if we take modulus of 1 plus I, we get root 2. So your option B will satisfy. Now comes to question number 10. What is the value of summation n is equals to 1 to 20
I raised to n minus 1 plus I raised to n plus I raised to n plus 1. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देर आर डिफरेंट वेज, बट इफ वी टेक I raised to n कॉमन, what we get? We get 1 plus I plus 1 plus I. And we know that 1 plus I can be written as minus I. So we get minus I plus 1 plus I. So minus I cancel with plus I. So I raised to 20. We know that if we take sum of 4 consecutive power of iota, we get 0. So your option number B will satisfy this question. Now comes to question number 11. In question number 11, let x, y, and z be a GP, but condition apply x, y, and z should be greater than 1. Then we need to evaluate 1 over 1 plus ln x, comma 1 over 1 plus ln y, comma 1 over 1 plus ln z are in AP, GP, HP, or neither in AP, nor in GP, or nor in HP. This is also simple question. So we remember if x, y, and z are in GP, then we know that log x, log y, log z are in AP. And we also know that if we add or subtract for any AP, we get resultant result is also in AP. So we add 1 for each term. So we get 1 plus ln x, 1 plus ln y, and 1 plus ln z are also in AP. If we reciprocal of AP, we know that we will get resultant sequence in HP. So your option number C will satisfy for this question. Now comes to another question. Question number 12. Question number 12 में आपको ओमेगा का जनरल वैल्यू आपको दिया है एंड एक डिटर्मिनेट सॉल्व करने को बोला है. So if we solve this determinate, we need to remember same 3 concept. Concept first is 1 plus omega square equals to 0. If we take 1 plus omega, we get minus omega square. 1 plus omega square equal to minus omega, and omega plus omega square is equals to minus 1. So if we replace these values in our given determinate, we get 0. So according to that, our option A will satisfy this question. Now comes to question number 13. In question number 13, if the sum of the first n terms of a series is n times 2n plus 1, then what is the nth term? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे. इफ वी पुट n as a 1, what we get? We get 3. Same as A1, your first option 4n minus 1. If we put n is equals to 1, so only option A will verify for this question. So according to that, your option A will correct for this question. Now comes to question number 14. In question number 14 में आपसे पूछा है how many ways can the letters of the word India be permutated such that in each combination vowels should occupy odd position. So in word India there are 3 vowels and 2 consonants. So number of ways vowels should occupy odd position. So we have only 3 odd positions. So we use factorial 3 in numerator and divided by 2 factorial. We take 2 factorial because there are 3 vowels, but 2 vowels are repeated into, and there are remaining 2 position can occupy with consonant, and there are 2 consonants, so we can arrange as 2 factorial. If we solve this part, we get 6. So 6 is your B option. Now comes to question number 16. In question number 16, letters of the word
equation are arranged in such a way that all vowels as well as consonant are together. Sorry, question number 15 is question number 15. The letters of the word equation are arranged in such a way that all vowels as well as consonant are together. How many such arrangements are there? So let's check with our solution part. In word equation, there are 5 vowels and 3 consonants. If we take 3 consonants together, we get arrange factorial 3 ways. And if we take vowels combined, we can arrange as a factorial 5 ways. But consonant and vowels also arrange with factorial 2 ways. If we solve this multiplication part, we get 1440. So your option C will correct. Now comes to question number 16. So question number 16 is, if n is a root of the equation x square plus px plus m is equals to 0 and m is a root of the equation x square plus px plus n equal to 0, we need to find out the value of p plus m plus n. If यदि n आपको इस इक्वेशन में आपको रूट दिया है तो इट विल सेटिस्फाई our given equation. So we can write n square plus pn plus m equal to 0. Similarly, if m is a root of x square plus px plus n equals to 0, this is also satisfy this equation. What we get? We get m square plus pm plus n equals to 0. So equation first and second say we can compare. If we compare it, we get final result is p plus m plus n is equals to 1. So your option number C will satisfy this question. Now comes to question number 17. So in question number 17, how many ways can a student choose n minus 2 courses out of n courses if 2 courses are compulsory? Now comes to our solution part. Then solution part, आपको जो first line mention किया है उसमें दिया है number of ways can student choose n minus 2 courses out of n course is equals to nc n minus 2. But according to question, there are 2 courses जो उसने compulsory किया है. So if 2 courses are compulsory, then we can take minus 2 n minus 2 c n minus 4. But we know that NCR is equals to NC n minus R. So what we get? NC n minus 2 C n minus 4 is also equals to n minus 2 C2. If we expand this combination, we get n minus 2 n minus 3 over 2. So your option D will satisfy. Now comes to क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है इन फॉर्म ऑफ dn एंड वी नीड टू इवैल्यूएट summation n is equals to 1 to 4 dn. So for this question, first we simplify this determinant. If we simplify this determinant, first we take 20 common as column second and 10 common as column third. Similarly, n common as column first. So we get 200n, and if we simplify this determinant, finally we get minus 200n into n minus 1 the whole square. If we put value of n 1,
2, 3, and 4, we get minus 10,000. So according to our solution, option A will satisfy. Now comes to question number 19. In question number 19, में आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स P एंड मैट्रिक्स Q, और आपसे पूछा है PQ is a null matrix. Statement second, QP is an identity matrix of order 3, and statement third is PQ is equals to QP. If we solve P and Q, we get a null matrix. Similarly, if we multiply QP, we also get a null matrix. But statement first is correct because PQ is a null matrix. But here statement second is false. Why? Because QP is a null matrix, but according to our question, mention QP is an identity matrix. And statement third, PQ and QP both are equal. So according to our solution, statement numbers first and third is only correct. So according to that, only option C will satisfy. Now comes to question number 20. So question number 20 is, if P is a square matrix of order 3, then what is the determinant P equals to? So we know that if any square matrix of skew-symmetric matrix of order 3, which means odd order, all determinant of skew-symmetric matrix of odd order will be 0. So your option number B will satisfy. So let's start with question number 20 first. Question number 26 में mention किया है 4 sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi. Then what is the value of sin inverse x plus 4 cos inverse x is equals to? Now comes to solution part. So our solution part is, for this question, यदि आपको इस question को solve करना है, we need to remember one identity, which is sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2. So if you replace value of cos inverse x is equals to pi by 2 minus sin inverse x, we get sin inverse x is equals to pi by 6. So x is equals to 1 by 2. So if we put x is equals to 1 by 2, what we get? We get pi by 6 plus 4 times pi by 3, because cos inverse 1 by 2 is pi by 3. After solving this calculation, we get 3 pi by 2. So your option number C will satisfy. Now comes to question number 22. So in question number 22, what is the value of cot square sec inverse 2 plus tan square cosec inverse 3 is equals to? So for this question, we need to make a right angle triangle property. So your sec theta, sec inverse 2 is given. Similarly, cosec inverse 3 is given. So we know that sec theta is hypotenuse upon adjacent. Similarly, cosec theta is hypotenuse upon opposite. Cot theta is opposite adjacent upon opposite, and tan theta is opposite upon adjacent. So if we take sec inverse 2 is theta, so your theta is sec theta is equals to 2 by 1. So sec theta is 2 by 1, which means your hypotenuse is 2 and adjacent is 1. So your opposite side will be under root 3 with Pythagoras theorem. Same as your statement number second, cosec inverse 3 is equals to theta. So your cosec theta is 3 by 1. So your hypotenuse would be 3 and opposite is 1. So if we solve using Pythagoras theorem, we get your adjacent part is root 8. Similarly, so your cot inverse is 1 by 3 and your cosec inverse 3 is equals to tan inverse 1 by 8. So your cot inverse cancel out, we get 1 by root 3. So tan inverse cancel out, we get 1 over root 8. So after solving this part, we get 11 by 24. So your option B will correct. Now comes to question number
23rd. In question number 23, in a triangle ABC, similarly, another result is A over cos A, B over cos B is equals to C over cos C. What is the area of the triangle if A is equals to 6 centimeter? So if we talk about solution of this part, इस क्वेश्चन के लिए we need to remember sine rule. So what is sine rule? Sine rule is A over sine A, B over sine B, C over sine C. That consider is equals to K. So if we take value of A, B and C, our value of A, B and C is K sine A, K sine B, K sine C. If we put these values, so finally we get tan A, tan B and tan C. This is only possible if capital A, capital B and capital C is 60 degree. If all angles of a triangle is 60 degree, we know that this triangle is known as equilateral triangle. And we also know that area of equilateral triangle is root 3 by 4 side square, and side is given. So if we put side value is 6, finally we get 9 root 3, which means option A is correct. Next question, question number 24. The roots of the equation 7x square minus 6x plus 1 equals to 0 are tan alpha and tan beta, where 2 alpha and 2 beta are the angles of a triangle. Which one of the following is correct? So, quadratic equation हमें given है, if ax square plus bx plus c equals to 0 is given, then sum of root, which means alpha plus beta, is minus b upon a, and product of root alpha beta is c upon a. According to this statement, we can write tan alpha plus tan beta is 6 by 7 and tan alpha into tan beta is 1 by 7. We know that tan alpha plus beta is tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta. After solving this part, we get tan alpha plus beta is equals to 1. So here alpha beta is pi by 4. If we multiply 2, we get 2 alpha plus 2 beta is pi by 2. If two angles of a triangle is 2 alpha plus 2 beta and sum of both angle is pi by 2, so according to that, our third angle is also 90 degree because triangle is right angle. So your option number C will correct. Now comes to question number 25. In a triangle of ABC, angle A is 75 degree, angle B is 45 degree. What is the value of 2A minus B is equal to? Now comes to using sine rule. We can easily solve this question using sine rule. Sine rule said sine A over A, sine B over B is equals to sine C over C. So angle A and angle B is given. So we can easily calculate angle C using sum of all angle of a triangle is 180 degrees. So your angle C will come 60 degree. If we put capital A, capital B and capital C values, we get sine 75. We know that root 3 1 plus 1 by 2 root 2. Sine 45 is 1 by root 2 and sine 60 is root 3 by 2. So after solve this calculation part, we get 2a minus b is equals to root 3b. So your b value, if we put b value as root 2c by root 3, after root 3 cancellation, we get root 2c. So your option B will correct for this question. Now comes to question number 26. In question number 26 is, what is the number of solution of the equation cot 2x, cot 3x is equals to 1 and x lie between 0 and pi. So if we talk about solution of this part, what we get, cot 2x and cot 3x is equals to 1. So we need to remember one statement. स्टेटमेंट आपको याद रखना है, cot a into cot p यदि आपको 1 मिलता है
So always a plus b is equals to odd multiple of pi by 2. So here is a is 2x and b is 3x. So if we sum, so 5x is equals to odd multiple of pi by 2. So 5x is, if our first natural number is 1, if we put n is equals to 1, we get 5x is equals to 90 degree. If we put n is equals to 2, we get 270. Same as 3, we get 450. N is equals to 4, we get 630. N is equals to 5, we get 810. So as x lie between 0 degree and 180, but our angle is 5x. So our 5x angle lie between 0 to 900. So according to values, 90 degree, 270 degree, 450 degree, 630 and 810 lie between 0 and 900 degree. So number of solution is only 5. So your option number C will correct for this question. Now comes to question number 27. In question number 27 is, what is the general solution of cos 100x minus sin 100x is equals to 1? So here is, this is the only possible value of if x is equals to pi by 2. In question number 27, what is the general solution of cos 100x minus sin 100x is equals to 1? So above equation will satisfy odd as well as even multiple of pi. So we can't take as option B and C. So we can choose direct option A, because option A will consider as odd multiple of pi as well as even multiple of pi. So your option A will be correct. Now comes to next question, question number 28. In a triangle ABC, tan A plus tan B plus tan C is equals to K is given. और आपसे पूछा गया है what is the value of cot A, cot B and cot C. So in this question, we know that if A plus B plus C is equals to pi, then tan A plus tan B plus tan C is equals to tan A into tan B into tan C. तो ये स्टेटमेंट आप एज अ नोट मेंशन कर सकते हो इन योर फ्यूचर एनडी एग्जाम कि if a plus b plus c पाई होगा तो tan a plus tan b plus tan c is equals to tan a tan b tan c. So tan a plus tan b plus tan c की वैल्यू हम k कंसीडर करेंगे and tan a is the reciprocal of cot, so we can write 1 over cot a, 1 over cot b and 1 over cot c. So if we cross multiply, cot a plus cot b plus cot c will give 1 by k, and 1 by k is your final answer is 0.5k. So your option A will satisfy. Now comes to question number 29. Question number 29 में आपसे पूछा गया है what is the value of sin 12 degree into sin 48 degree. So for this question you need to remember identity. Identity is 2 sin A sin B is equals to cos A minus B minus cos A plus B. So if we multiply with 2 and divide by 2, we get 2 sin 12 degree into sin 48 degree. After we apply this identity, we get cos minus 36 minus cos 60 degree. We also remember to solve this question is cos minus theta is equals to cos theta, because theta lie in fourth quadrant, and in fourth quadrant only cos and sec theta is positive. So your cos 36 value is root 5 plus 1 by 4 and cos 60 is 1 by root 2. If we simplify this calculation, we get root 5 minus 1 by 8. So your option number C will correct. So question number 30 is cos 17 degree minus sin 17 degree divided by cos 17 degree plus sin 17 degree. So if this type of question will come in your
future ND exam, we can take divided by sine 17 because, sorry, divided by cos 17 degrees. So cos 17 degrees, if we divide numerator as well as denominator, we get 1 minus tan 17 degree upon 1 plus tan 17 degree. And we know that cos tan 45 minus theta is equals to 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. So we can take as the next step tan 45 degree minus sine 17 degree. So we get tan 28 degree. We know that tan 90 minus theta is cot theta. So we can reduce 28 as 90 degree minus 62 degree. So tan 90 minus 62 degree is cos 62 degree. So your option D will correct. Now comes to question number 31. In question number 31, there are three statements, tan 22.5 degree, cot 22.5 degree, and in your third statement, tan 22.5 degree minus cot 22.5 degree. So how many of the above are irrational number? So we know that tan 22.5 degree is the value of root 2 minus 1, which is irrational. So your first statement is correct. Your second statement, cot 22.5 degree, value of cot 22.5 degree is root 2 plus 1, which is also irrational. Your second statement is correct. If we talk about third statement, difference of tan 22.5 minus cot 22.5 degree, we get minus 2, which is rational. So your third statement is not the correct statement. So only two options will correct. So your option number C is correct for this question. Now comes to question number 32. In question number 32, if x cos theta is equals to y upon cos 2 pi by 3 minus theta is equals to z upon cos 2 pi by 3 plus theta, then what is the value of x plus y plus z? So this question is same as question number 43 from set C, but this is set A. So this question is differ. So we can take cos theta divided by cos 2 pi by 3 minus 3 divided by cos 2 pi by 3 plus theta. So our theta would be 60 degree as we proved already. So if we take ratio cos 60 degree and cos 180 degree, we get 1 by 2 cos 60 value, cos 60 same as 1 by 2, and cos 180 degree is minus 1. If we multiply it by 2, so finally we get 1 ratio minus 2. So just put these value as x, y, z. So we get 0 as option B is correct. So now comes to question number 33. If P tan theta minus 30 degree is equals to Q tan theta plus 120 degree, we need to evaluate value of P plus Q divided by P minus Q. So if we take P and Q same side and tan theta plus 120 and theta minus 30 degree as another side, and for this question आपको इस क्वेश्चन के लिए एक रूल ध्यान रखना है, जिस रूल को हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल. So let us understand with an example. So example, we consider A upon B is equals to 2 by 3. So if we add B in numerator, we same subtract as denominator. So A plus B over A minus B same as your right hand side 2 plus 3 over 2 minus 3. So if we apply componendo dividendo rule for our question, we get sine theta plus 120 plus theta minus 30, and in denominator sine theta plus 120 degree minus theta minus 30 degree, we get sine 90 plus 2 theta, and in denominator sine 150 degree. And value of sine 150 is 1 by 2, and sine 90 plus theta is cos theta. So after solving this part, we get 2 cos 2 theta will match
your option number D. So for this question, option D will verify. So now comes to question number 34. This is also statement based question. In question number 34, P and Q be two non-void relation on a set Q, and which of the following statements are correct? So this is, as I said earlier, this is theory based question. We should remember if A and B reflexive, then A intersection B is also reflexive. Same, A, B symmetric, then A union B is also symmetric. And if A and B, two sets, both sets are transitive, then A intersection B is also transitive. So your statement first, second, and third, all statements are correct. So your option D will verify for this question. Now comes to question number 35. In question number 35, A and B are two non-empty sets having 10 elements in common. Then how many elements do A cross B and B cross A have in common? So आप इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इफ A इंटरसेक्शन B में आपको m एलिमेंट्स क्वेश्चन में गिवन हो और आपसे A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे पूछा जाए, so you can direct apply formula of m square. So here number of element of A intersection B is given 10. So in this question, you need to evaluate number of element in A cross B intersection B cross A. So we can take 10 square. So 10 square is basically 100. So your option D is correct for this question. Now comes to question number 36. What is the remainder when 7 raised to n minus 6n is divided by 36 for n is equals to 100? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे. सो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग 7 रेज टू n को वी कैन रीराइट 1 plus 6 raised to n. If we open binomial expansion, we get 1 plus 6n plus nc2 6 square plus nc3 6 cube up to ... So if we take 7 raised to n minus 6n, 6n से आपका 6n कैंसिल होगा, we get only 1 plus nc2 6 square plus nc3 6 cube plus ... Same as if we take 6 square as a common, we get nc2 plus nc3 6 plus up to n terms. So 6 square, which means 36, is divisible by 36, so only one remainder will be left. So your option number B will correct for this question. Now comes to question number 37. So in question number 37, what is the maximum number of possible points of intersection of 4 straight lines and a circle? Intersection is between line as well as circle and lines. So number of point of intersection with the help of line. So आपको minimum 2 lines का requirement होगा if you intersect 2 lines. So there are 4 lines are given, so we can take 4c2. So number of point of intersection with help of line is 4c2. Same as if we have a circle, so we need to take only one circle is given, but lines are 4. So number of points of intersection with help of circle and line. So one circle is there, so 1c1, and line, if you intersect line and circle, you require only one line. So there are 4 lines, we can choose 4c1, but there are 2 points of intersection when circle and line will intersect. So your final answer is maximum number of possible is equals to your 4c2, which means number of point of intersection with help of line, plus number of point of intersection with help of circle and line is 8. If we solve this part, 4c2 will come as 6 plus 8 is equals to 14.
So your option number C will be correct option. Now comes to question number 38. In question number 38, given in an AP, the ratio of sum of first P term to the sum of first Q term is P square by Q square. Which of the following is correct? Now comes to with option as well as solution part. So आपको SP upon SQ question में given है P square by Q square. So we apply formula of SN. SN formula is n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. So in place of n, we use P numerator. In denominator, in place of n, we replace q. So after simplify, we get d is equals to 2a. So which means your common difference is equal to twice the first term. So your statement third is correct. So your option number C is correct for this question. Now comes to question number 39. Question number 39 में आपसे पूछा है कि what is the number of real roots of the equation. So most of the student n x की place पे 1 substitute करेंगे, 3 substitute करेंगे, 5 substitute करेंगे. But this is only x is equals to 1 पे this equation will not satisfy, same as 3, same as 5. Now comes to solution part. So it is possible only, जो आपको इक्वेशन स्टेटमेंट मेंशन है, this is only possible when 1, 3, 5 together our equation will satisfy. So there is no real root, or you can also check one more method, which means your b square minus 4ac is less than 0 for real root. So there are no possible options. So we can take option number A. So there is no real roots. Now comes to question number 40. Question number 40 में आपसे पूछा है, in a class of 240 students, 180 pass in English, 130 pass in Hindi, and 150 pass in Sanskrit. Further, 60 pass is only one subject, 110 pass in only two subjects, and 10 pass is none of the subjects. So question में आपसे last line में mention किया है, how many student pass in all three subjects. इस क्वेश्चन को most of the student consider as Venn diagram, but we can easily solve whatever information is given. So first we consider only one subject pass student. So one subject में जो बच्चे पास हुए हैं, there are 60 students, same as two subject pass student is 110. But 10 student ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हैं. So according to given information, we can find कि total number of student कितने हैं जो पास हुए हैं. So total student is 240, but 10 student ऐसे हैं according to information जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हैं. So there are 230 students which is pass whole subjects. So how many student pass in all three subjects? तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हैं तीनों सब्जेक्ट में उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. 230 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 स्टूडेंट जो पास हुए हैं वन सब्जेक्ट में, 110 जो स्टूडेंट पास हुए हैं टू सब्जेक्ट्स में. आफ्टर सॉल्विंग दिस पार्ट वी गेट 60. सो 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं. सो अकॉर्डिंग टू आवर सॉल्यूशन पार्ट, ऑप्शन ए विल सेटिस्फाई. So let's start with question number 41. So question number 41, based on direction, consider the following for the two items that follows. Z1 और Z2 आपको टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और एक रिलेशन मेंशन किया हुआ है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 इज इक्वल्स टू 0. और आपसे क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ Z1 divided by Z2. So let's start with solution part. So ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम Z1 और Z2 को कंसीडर करेंगे कि Z1 ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सिमिलरली ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स नंबर.
So if we put omega square as Z1 and omega is Z2, so your equation will satisfy. So omega 4 plus omega square plus omega cube, similarly we get 0. So your equation will satisfy if we take Z1 as omega square and Z2 is omega. So if we take Z1 by Z2 modulus, we get modulus of omega, and omega value is -1 plus I root 3 by 2. And if we take modulus of this part, we get 1. So your option A will satisfy. Now comes to question number 42. Question 42 में same concept है, same equation है, but पूछे आपसे 1/2 plus real part of Z1 divided by real part of Z2. So we know that as omega square value is -1/2 minus I root 3 by 2, and omega value is -half plus I root 3 by 2. So if we take real part of Z1 by Z2, we get real part of omega. So real part of omega is basically -1/2, and if we solve, we get 1/2 minus 1/2, we get 0. So option B आपका satisfy करेगा for question number 42. Now comes to question number 43. 43 question में आपको बोला है the product of 5 consecutive terms of an AP is 2 to 9 6 3 5. So 2,29,635, and also the first, second and fifth term are in JP. Let us start with our solution part. So product of 5 consecutive of an AP is 2,29,635. So we consider as 5 consecutive terms are A minus 2D, A minus D, A plus D and A plus 2D. According to our question, first, second and fifth term are in GP. If 3 terms are in GP, so square of second term is equals to product of first and last term. So A minus D square equals to A minus 2D and A plus 2D as first and fifth term. So after solving this part, we get A is equals to 5D by 2. So A is equals to 5 by 2. यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस करेंगे, so आपको D की वैल्यू 6 मिलेगी. So according to that, our option number D will satisfy this question. The next question is, what is the sum of all 5 terms? If we add all consecutive terms of an AP, we get 5A because all D term will cancel out. And value of A is already evaluated, which is 5D by 2. And value of D is 6, so we get 75. Option number C is correct. Now comes to question number 45. Question 45 में there are value of U plus V and W is given, and U is an integer and V is lie between 0 and 1. So if we take that, we know that value of root 7 and 3 root 7, putting these value in our question, we get 0 lie between 0 and 1. Value of W lie between 0 and 1. So after solving first and second, we get V plus W lie between 0 and 2. So only D option will satisfy because V plus W is 1 will satisfy only inequality. 8 will not satisfy. Similarly, 4 and 2 will not satisfy. So our option number D will correct for this question. Now comes to question number 46. 46 में आपको बेसिक A plus B, A minus B का आइडेंटिटी यूज करना था, और इस क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन पार्ट. सो सॉल्यूशन पार्ट में यदि आप U plus V into W करेंगे, तो A plus B और A minus B का ऑपरेशन से A square minus B square which means 64 minus 63 whole raised to 20. And 1 की power any number will give 1. So your option B will correct for question number 46. Now comes to question number 47. 47 में आपके पास एक इक्वेशन दिया है और आपसे बोला है कि जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो इक्वल है. So we need to remember, if any quadratic equations give equal root, our condition would be
b square minus 4ac equal to 0. If we substitute value of b, a as well as c, after solving this equation, we get 1 upon a square plus 1 upon c square is equals to 2 times b square. This is the relation when a square, b square, c square are in HP. So your option number C will correct for this question number 47. Now comes to question 48. In question 48, which one of the following is a root of the equation? If roots are equal, then our x is equals to minus b by 2a. If we put value of b and 2a, we get, after solving this equation, we get b square over c square minus a square divided by 2a square bracket c square minus b square. So your option number C will correct for this question. Now comes to question number 49. 49th में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है A, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A इनटू एडजॉइंट A. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल आपको एक आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट है और वो आइडेंटिटी होती है A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I. सो इस क्वेश्चन के लिए आपको एडजॉइंट ए निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी. आपको इस क्वेश्चन में यदि आपको ये आइडेंटिटी पता है तो आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ए की हेल्प से इस क्वेश्चन को बहुत ही कम स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं. सो डिटर्मिनेंट ए विल कम एज 1. सो इफ 1 इनटू आइडेंटिटी विल कम एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो ओनली ऑप्शन डी विल सेटिस्फाई. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 50. सेम एज क्वेश्चन 50, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, बट डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 है, सो आपका एडजॉइंट ए ही आपका ए इनवर्स कहलाएगा. तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट एंट्री इज कोफैक्टर फाइंड आउट करना है A11. जब हम A11 की वैल्यू इवेलुएट करेंगे तो उसका वैल्यू सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 1. सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ओनली option A gives first entry is 1. So your option A will correct. So आपको बाकी options verify करने की requirement नहीं है, because first entry A inverse में चारों option में केवल option A के लिए satisfy करेगा. Now comes to question number 51. Question number 51 में आपसे बोला गया है what is 3 alpha plus 2 beta is equal to 2i plus 6j plus 27k cross I cap plus alpha j plus beta k cap is a null vector. तो यदि हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट रो में I कैप, J कैप, K कैप मिलेगा. सेकंड रो में जो फर्स्ट वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है उसमें I कैप, J कैप, K कैप के कोएफिशिएंट. सिमिलरली थर्ड रो में आपको सेकंड वेक्टर के I कैप, J कैप, K कैप के कोएफिशिएंट. जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और इक्वेट करेंगे जीरो वेक्टर से तो आपको 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6 मिलेगा और अल्फा इज इक्वल्स टू 3. सिमिलरली -2 बीटा प्लस 27 कंपेयर विद 0, वी गेट बीटा इज इक्वल्स टू 27 by 2. If we put value of alpha and beta, 3 alpha plus 2 beta, we get 36. So your option number A will correct. Now comes to question number 52. Question 52 में आपसे बोला गया है for what value of the angle between the vector A and vector B is the quantity A cross B का magnitude plus √3 of A dot B का magnitude is maximum. So A cross B का magnitude, we know that magnitude of A, magnitude of B into sin theta. Similarly, magnitude of A into magnitude of B is equals to A magnitude, B magnitude into cos theta. तो यदि हम इन दोनों को से √A का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ B को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा प्लस √3 magnitude of cos theta, and we know that A sin x plus B cos x का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है
वो आपका होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहां से आपको वैल्यू ऑफ ए इज 1, वैल्यू ऑफ बी इज √3, सो मैक्सिमम वैल्यू इज √2। बट हमें फाइंड करना है ये मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू a over under root a square plus b square. Value of a is 1 and we also calculate value of maximum value is √2. So √2 the square is 2. So sin theta is basically 1/2 and 1/2 sin में आपको 30 डिग्री पर मिलता है. So your option B is correct. Now comes to question number 53. 53 में आपसे बोला है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और क्वेश्चन में मेंशन है a प्लस 2b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाएंगे। यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। सो इफ वी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a प्लस 2b वेक्टर डॉट 5 वेक्टर a माइनस 4b वेक्टर, we get 5 magnitude of a square minus 4 times vector a dot vector b plus 10 times vector a dot vector b minus 8 times vector b का square is equals to 0. But in given question, vector a and vector b is a unit vector. So both vector का magnitude आपको 1 मिलेगा. So finally what we get a dot b is equals to 1/2. And a dot b is basically magnitude of a into magnitude of b into cos theta. So here cos theta gives 1/2 and cos theta में 1/2 मिलता है आपको 60 डिग्री पे. So you need to just replace value of theta in given condition. Condition is cos theta plus cos 2 theta. So if we substitute cos 60 plus cos 120, we get 0. So your option A will satisfy. Now comes to question number 54. 54 में आपको एक रेगुलर हेक्सागन दिया है और दो कंडीशन आपके पास मेंशन है। AD वेक्टर इज m टाइम ऑफ BC वेक्टर एंड CF वेक्टर इज n टाइम ऑफ AB वेक्टर। आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ mn, किसके इक्वल होगा। सो लेट्स मेक अ रेगुलर हेक्सागन। हमें कंडीशन पता है कि यदि आपका AB एक ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है तो AB इज ट्वाइस ऑफ CF. सो अकॉर्डिंग टू दैट AB एंड CF बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन. सो वी कंसीडर n is -2 but m is 2 because AD vector and BC vector have same direction but CF vector and AB vector are opposite direction. So m consider as 2, n consider as -2 due to opposite direction. So your mn would be -4. So your option A will satisfy. Now comes to question number 55. 55 में आपसे बोला है A, B और C vectors of the same length, which means all vector have same magnitude. If taken pairwise, they form equal angles. If vector A I plus j, vector B j plus k, then we need to evaluate C vector can be I plus k or second statement minus I plus 4j minus k divided by 3. So if we take vector A dot vector B, we gives cos theta is equals to pi/3 because vector A is already given, vector B is already given. So if we take C as I cap plus j cap, our theta would be pi/3. Same as if we take vector C as minus I cap plus 4j cap minus k cap divided by 3, we also get theta as pi/3. So according to our solution part, vector C can be statement first as well as statement second. So our both statement is correct. So option number D is correct. So now comes to question number next. Question number next is 57. In 57th is
The diagonal of quadrilateral ABCD are along the line x minus 2y is equals to 1 and 4x plus 2y is equals to 3. The quadrilateral ABCD, हमें ABCD quadrilateral find करना है, मे बी rectangle होगा, cyclic quadrilateral, parallelogram और rhombus. So let's make a quadrilateral ABCD. So first we find slope of AC. यदि आप slope of AC find out करेंगे, so slope of AC would be 1 by 2. Similarly, you need to evaluate slope of BD. So slope of BD will come as minus 2. If we product of slope of AC and BD, we get minus 1. So this represents, if slope product of two slope is minus 1, it means both lines are perpendicular. So there are only two cases if any quadrilateral is, if diagonals of quadrilateral are perpendicular, it means it is possible only for rhombus as well as square. But in this option, only rhombus are given, so we will take option number D. So now comes to question number 57. Question number 57 is, the foci of the ellipse are Q and R. If P is any point on the ellipse, then what is the value of PQ plus QR is equal to? So our ellipse equation is 4x square plus 9y square is equals to 1. So let's rewrite our equation as x square by 1 by 4 plus y square by 1 by 9 is equals to 1. So here your value of A is 1 by 2 and value of B is 1 by 3. If you need to find out PQ plus PR is always equals to 2 times A. So if we compare A as 1 by 2, our final value is 1. So your statement number B is correct. Now comes to question number 58. In question number 58, P, Q, R, and S are the vertices of a parallelogram. Then you need to find out value of x plus y. So first we find out coordinate of S. So here is PQRS. So PR and QS are the diagonals of a quadrilateral. Quadrilateral is parallelogram, so it intersects at same point. So if we find midpoint of PQ, we get 6, 9, and if we evaluate intersection point of QS, which means midpoint, we get x plus 8 by 2 and y plus 12 by 2 using midpoint formula. So as PR and QS intersect at same point, so we can compare x plus 8 by 2 as 6 and y plus 12 by 2 is 9. So after solving this part, x is 4 and y is 6. So if we add x plus y, we get 10. So our option B will verify for this question. Now comes to question number 59. 59 क्वेश्चन में आपको सर्कल का इक्वेशन दिया और आपसे पूछा है फर्स्ट स्टेटमेंट में end points of a diameter of circle are 1, 2 and 3, 4. Second statement said that the end point of a diameters of a circle 1, 4 and 3, 2. And third statement is end points of a diameters of a circle are 2, 4 and 4, 2. So let's check which option will be correct. So equation को simplify करने के बाद if we compare as a center, so we get center is -2 and -3 is a value of G and F and C value is 11. But center would be -G and -F. So your value of coordinates of center would be 2, 3. So end points of a diameter consider 1, 2 and 3, 4. If we using midpoint formula, we get 2, 3. So option first statement is correct. Now if we check second statement taken as 1, 4 and 3, 2,
as an endpoint of diameter, this is also correct using midpoint formula because 2, 3 is your coordinates of center. But if we take as 2, 4 and 4, 2 endpoint of diameter, this will not satisfy your coordinates of center. It will give 3, 3, but our center of this circle is 2, 3. So according to our solution part, only option A is correct. Now comes to question number 60. Question number 60 is, consider the point P and Q lie on the parabola y square is equals to 4kx. If the vertex is A, then what is angle PAQ? So here A is our vertex part. So if we join AP and AQ and also find out slope of AP and slope of AQ, we gives 1 and -1. If we product of both slope, we get -1. So if product of their slope is -1, we can conclude lines are perpendicular. So therefore, AP is perpendicular to AQ. So therefore, angle PAQ is 90 degree. So your option B will correct for this option. So question number 61 में a triangle ABC is inscribed in the circle x square plus y square equals to 100. B and C have coordinates 6, 8 and -8, 6 respectively. We need to find out what is angle ABC. So let's come with solution part. In this solution, so here x square plus y square equals to 100. Our center will be 0, 0 and radius is 10. So let's B and C consider as 6, 8 and -8, 6. So first we find as slope of OB. So slope of OB becomes 4/3 and slope of OC is equals to -3/4. So if we multiply of their slope, we give -1. So therefore, we can conclude angle COB is equals to 90 degree. So if angle COB is 90 degree, so according to triangle and circle property, if angle ACB is equals to angle twice of angle COB. So we can write angle COB is 2 theta is equals to 90 degree. So theta will become 45 degree. So your option number C is only pi/4 options are there. So we can consider as option C is correct for this question. Now comes to question number 62. In question 62, what are the coordinates of A? So here A is lying on the circle. So A can be moved. So यदि आपका A coordinates move कर सकता है, so we can't find exact coordinate of A. So which means our insufficient data is given. So our option D would be correct. A can't be determined. Now comes to question number 63. In question 63, ABC is an isosceles trapezium and AB is parallel to DC. ABC and A, B and C be the vertices of isosceles trapezium. We need to evaluate coordinates of vertex D. So if ABCD is the isosceles trapezium, then AB is parallel to DC is also AD is equals to BC. So if we compare AD using distance formula, so we get x minus 2 the whole square plus y minus 3 the whole square is equals to √5. So only option C will satisfy our equation first. So according to that option, coordinate of D will be 1, 1, which means option C will satisfy question 63. Now comes to question number 64. What is the point of intersection of the diagonals of the trapezium?
So first we find equation of AC using Point's law form. So Point's law form is y minus y1 is equals to m x minus x1. Similarly, we can easily calculate equation of BD. Equation of BD find out करेंगे हम same y minus y1 is equals to slope of BD bracket x minus x1. If we put x1, y1, x2, y2 values, we get two equations of diagonal AC and BD. Equation of AC we get 2x plus 3y equals to 13, and equation of BD is 2x minus 3y equals to minus 1. After solving first and second, we get x is equals to 3 and y equals to 7 by 3. So your option B will satisfy of question number 64. Now comes to question number 65. In question number 65, sphere ka equation is given and you need to find out diameter of the sphere. So first we divide by 2 because coefficient of x square, y square और z square आपको हमेशा 1 के इक्वल रखना है. So there are coefficient of x square, y square and z squares are 2. So we divide by 2. So if we compare with general equation of a sphere, we get u is equals to 3 by 4, v equals to 3 by 4, w is equals to 3 by 4, and value of d is minus 3. And we know that radius formula for a sphere is under root u square plus v square plus w square minus d. If we substitute these values, we get root 75 by 4. But this is your radius. We need to evaluate diameter. And we know that diameter is twice of radius. So we get 5 root 3 by 2. So your option B will satisfy for question number 65. Now comes to question number 66. In question number 66, the center of the sphere lies on the plane. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सेंटर आया स्फीयर का वो प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे. सो ओनली ऑप्शन डी विल वेरीफाई फॉर क्वेश्चन नंबर 66. सो योर ऑप्शन डी विल करेक्ट. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 67. Let S be the line of intersection of two planes. Which of the following are the direction ratio of S? यदि line of intersection of two planes आपको find out करना है, so we have two planes for this question, x plus y plus z, and direction ratio of normal of first plane is I cap plus j cap plus k cap. And similarly for plane second, 2i cap plus 3j cap minus 4k cap. We need to find out n1 cross n2 vector. If we solve n1 cross n2 vector using cross product, we need to find determinant. So our first row will same as I cap, j cap, k cap, but second row and third row we can write as a coefficient of I cap, j cap and k cap. After solving n1 cross n2, we get minus 7 I cap plus 6 j cap plus k cap. So our direction ratio is minus 7, 6, 1. So your option number B will satisfy for question number 67. Now comes to question number 68. So our direction ratio is also evaluate. So L is minus a upon under root a square plus b square plus c square. So we get value of L is minus 7 by root 86. Same M is 6 by root 86, N is 1 by 8 root 86. We need to evaluate for question number 68 is 43 times L square minus M square minus N square. If we put these values, we get 6. So option number A will satisfy for question 68. Now comes to question number 69. Let L is equals to, there are two planes, x plus y plus z minus plus 4 equals to 0, same as 2x minus y minus z plus 8 be a line, and P is different plane, x plus 2y plus 3z plus 1 equal to 0.
So this question is same as 67th question. So we need to evaluate same as n1 cross n2. If we cross n1 cross n2, we get 0 I cap plus 3j cap minus 3k cap. But there are no option which have direction ratio 0, 3 and minus 3. So according to my solution, as of now, no solution will be correct. So now comes to question number 70. Question number 70 is, what is the point of intersection of L and P? So if point of intersection L and P, so P is a point which lie on the plane. So only D options के जो coordinates आपको given है, वो equation of plane को satisfy करेंगे. So that means your option D is correct for question number 70. So आपको इसको solve करने की requirement नहीं है, just आप option के through आप check कर सकते हैं. तो only D option will verify equation of plane. Now comes to question number 71. Z is greatest integer of y and y is greatest integer of x minus x. We need to find out x is not an integer but positive, then what is the value of z? So z y की value को यदि हम substitute करते हैं in place of y, we get greatest integer of z, greatest integer of x minus x and whole greatest integer of x. So as we already given in question, x is not an integer but positive. So let we consider x is equals to 2.5. आप x की वैल्यू कोई और वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाई हियर इज x इंटीजर नहीं होना चाहिए बट पॉजिटिव होना चाहिए. So if we put x is 2.5, greatest integer of 2.5 is 2 and 2 minus 2.5 gives minus 0.5 and minus 0.5 of greatest integer gives minus 1. So your option A will verify. Now comes to question number 72. 72 क्वेश्चंस में आपको fx और gx की वैल्यू गिवन है और आपको कंडीशन दिया है fog और gof is equal, what is the value of k? Let's start with solution part. तो solution part में मैंने fog और gof को दोनों को कंपेयर किया है. If we compare fog and gof, 4kx and 4kx will cancel out and your value of k will give 7. So your option A will correct for question number 72. Now comes to question number 73. What is the minimum value of the function fx is equals to log base 10 x square plus 2x plus 11? Most of the student इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे using derivative, first derivative, second derivative. But if we evaluate minimum value of log 10 x square plus 2x plus 11, we also using minimum value of quadratic equation. If we have any quadratic equation and we need to find a minimum value, so our minimum value formula is minus d upon 4a, and value of d is basically known as discriminant, and d is equals to b square minus 4ac. If we compare, as b is your 2, a is 1 and c is 11. So after substituting these value we get 10. So our minimum value of function is log base 10, 10. And we know that if base and number as same of logarithmic, our answer would be 1. So your option B is correct for question number 73. Now comes to question number 74. Which one of the following is correct regarding limit x tends to 3, modulus of x minus 3 divided by x minus 3? यदि हम मॉड्यूलस में लिमिट फाइंड आउट करते हैं, so there is maximum possibility कि जो आपका modulus part होता है gives two value. One is if x is greater than 3, we gives x minus 3. If your x is less than 3, we give minus of x minus 3. So left hand limit and right hand limit will not equal. So therefore
according to our question, limit does not exist. So option D is correct for question number 74. Now comes to question number 75. In question number 75, what is the maximum value of a cos x plus b sin x plus c? As we know that a cos x plus b sin x plus c, minimum value is c minus under root a square plus b square, and maximum value is c plus under root a square plus b square. बट हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बी सेटिस्फाई करेगा. सो ऑप्शन बी इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी. बट फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर एनडी एग्जाम आपको मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इसमें सी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यूज कर सकते हैं. सो बट राइट नाउ ऑप्शन बी विल करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 75. Now comes to question 76. In question number 76, f2x is given. Then for how many real value of x will f2x be the GM of fx and f4x? If we talk about solution part, if three numbers are, f2x be the GM of fx and f4x, so according to geometric mean condition, we can write f2x is equals to under root of fx into f4x. So if we take squaring on both sides, we get f2x the whole square is equals to fx into f4x. So if we put values of f2x, fx and f4x, we get 9x square is equals to 0. After simplify, we get x is equals to 0. So there is only one real value which is 0. So option C will satisfy for question number 76. Now comes to question number 77. So question number 77 gives fx is greatest integer of x square minus 30 times greatest integer of x plus 2 to 1 is equals to 0. क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीजर सॉल्यूशन. यदि आपको सम ऑफ ऑल इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे हमें सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे. तो यदि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x 13 और 17 मिलेंगे. सो x is equals to 13 only possible when x is 13, same as when x is 17 gives 17. So sum of all integer solution is 13 plus 70 which gives 30. So यहाँ पे मैंने एक गलत मेंशन किया हुआ है which is 70. So you can rewrite as 17 in place of 7070. So final answer is 30. So your option D is correct for question number 77. Now comes to question number 78. So 78 is fx is 9x minus 8 root x and gx is fx minus 1. तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन पार्ट पे. तो सॉल्यूशन पार्ट में fx के प्लेस पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 9x minus 8 root x. So we gave fx minus 1 equals to 0. So our quadratic equation look like 9x minus 8 root x minus 1 equal to 0. इस इक्वेशन को हम एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं 9 रूट एक्स द होल स्क्वायर माइनस 8 रूट एक्स माइनस 1 is equals to 0. If we factorize this quadratic equation, we get 9 root x plus 1 into root x minus 1 equal to 0. So there are two conditions. Condition first, 9 root x is equals to minus 1, and second condition is root x minus 1 is equals to 0. So root x is equals to minus 1 by 9, which is not possible because x gives our imaginary number. But if we take root x is equals to 1, so x is equals to 1, only one real root, which is an integer. तो x की केवल एक ही वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी जो आपको, so we can take as option number B. Option B gives
gx is equals to 0 has only one real root which is an integer. तो x is equals to 1 एक आपको integer value दे रहा है. Now comes to question number 79. Question 79 में आपको एक लिमिट बेस्ड क्वेश्चन है. लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 ब्रैकेट sec थीटा माइनस tan थीटा. तो इस क्वेश्चन में हम sec थीटा को रीराइट करके लिख सकते हैं 1 over cos थीटा and tan theta को लिख सकते हैं sin theta upon cos theta. So our question look like limit theta tends to pi by 2 1 minus sin theta over cos theta. If we put theta as pi by 2, our numerator as 0 same as denominator 0. So 0 by 0 recall as L'Hospital rule. तो यहां पर हम L'Hospital rule अप्लाई करेंगे. L'Hospital rule gives आपको न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सेपरेट करना होता है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेट करना होता है. सो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड साइन थीटा इज माइनस cos theta, but minus sign is already there. So minus cos theta upon minus sin theta gives positive cot theta, and cot pi by 2 gives 0. Our option B is correct for question number 79. Now comes to question 80. In question 80, fx is equals to fy is equals to fxy. f2 की वैल्यू आपको 4 दिया है और आपसे पूछा है f1 by 2 की वैल्यू क्या होगी. यदि हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट पे जाएं तो कभी भी आपको इन फ्यूचर fx इक्वल्स टू fx इंटू fy इज इक्वल्स टू fxy दिया जाए तो आप fx इज इक्वल्स टू x रेज टू n कंसीडर कर सकते हैं. तो यदि मैं x के प्लेस पे 2 सब्सटीट्यूट करता हूं तो मुझे 4 मिलेगा और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन इजिली कंपेयर n इज इक्वल्स टू 2. हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में वैल्यू f1 by 2. सो इफ वी पुट f1 by 2 वी गिव्स 1 by 2 का होल स्क्वायर विच मींस 1 by 4. सो 1 by 4 इज ऑप्शन नंबर A will satisfy for question number 8080. So let's start with question number 81. Question 81 में आपको fog x का वैल्यू cos स्क्वायर रूट x और gov का वैल्यू mod cos x आपको दिया हुआ है. आपको फाइंड आउट करना है which one of the following is f of x, मतलब आपको f of x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So let's start with our solution part. तो यदि हम सॉल्यूशन पार्ट को देखें तो सॉल्यूशन पार्ट से हमें इजीली वेरीफाई कर सकते हैं हम ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन के लिए वेरीफाई होगा बिकॉज cos स्क्वायर रूट x है. तो यहाँ पे जो gx की वैल्यू है विच मींस रूट x जो हमें 82 क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा. सो क्वेश्चन नंबर 81 का आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं. सो वैल्यू ऑफ f of x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2x. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 82. क्वेश्चन 82 में आपसे g of x पूछा है. तो g of x यदि आप बात करें तो ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई करेगा बिकॉज हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 81 में इसका बात कर चुके हैं. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 83. क्वेश्चन 83 में आपसे पूछा है f of x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर. आपसे वैल्यू पूछा है f of 0.999 प्लस f1.001. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना होगा. जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है यदि आपको 1 पॉइंट से लेके 1.99 कितना कोई भी वैल्यू यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखेंगे आप तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑलवेज आंसर मिलेगा 1. सिमिलरली यदि आप 0 से लेके 0.999 कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 0. तो यदि ये प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं एज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 0 विच मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 84. क्वेश्चन 84 में आपसे पूछा है कि फर्स्ट f of x is continuous at x equals to 0 एंड सेकंड स्टेटमेंट पे पूछा है fx is continuous at x equals to 1. यदि हम सॉल्यूशन पार्ट की बात करें तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0. फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, x यहाँ पे थोड़ा सा गलत मेंशन किया हुआ है. fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0. दिस इज स्टेटमेंट फर्स्ट, बट स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट नहीं है.
क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी चेक किया है 0 से लेस पे जो वैल्यू आ रही है वो आपकी सेटिस्फाई नहीं करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग वैल्यू आएगी और राइट हैंड लिमिट के लिए अलग वैल्यू आएगी। बट यदि हम बात करें फंक्शन की कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, तो उस केस में आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होगा। यदि हम 1 से लेफ्ट में मूव करें तो वी कैन कंसीडर एज 0.999, और क्वेश्चन नंबर 83 में हम चेक कर चुके हैं 0.999 को ग्रेटेस्ट इंटीजर में फिल करने के बाद हमें आंसर मिला था 0। सिमिलरली यदि हम बात करें राइट हैंड लिमिट की तो फंक्शन 1.001 को कंसीडर करने पे आपको आंसर मिला है 0। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बट यहां पे मैंने एज अ ऑप्शन में मेंशन किया है 1 ओनली। तो उसने बोला है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, तो 1 ओनली होगा, बोथ होंगे, सेकंड ओनली होगा, नाइदर 1 नॉर 2, बट ऑप्शन बी यहां पर मैच कर रहा है सेकंड ओनली, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप इस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं आंसर को, और ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हैं। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है आपसे, फंक्शन दिया हुआ है cos 2x प्लस एक्स और क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2, और आपसे पूछा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि इसमें आपको डेरिवेटिव करने की रिक्वायरमेंट होगी। डेरिवेटिव करने के बाद cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x, बट 2x को वापस करेंगे तो -2 रहेगा, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x, और x का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने की रिक्वायरमेंट है तो sin 2x इज इक्वल्स टू 1/2 मिलेगा, और sin 2x इज इक्वल्स टू 1/2 तो हमें -π/2 और π/2 के बीच का वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो यहां से हम 2x लिख सकते हैं π/6 और 5π/6, बट जो x हो जाएगा वो इफ वी टेक डिवाइड, सो व्हाट वी गेट π/12 एंड 5π/12। अब हमें जितनी भी वैल्यूज आई हैं क्रिटिकल पॉइंट की, उन वैल्यूज को, और जो क्वेश्चन में गिवन है -π/2 और π/2, उन सब वैल्यू पे यदि हम फंक्शन को, ये वैल्यू को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 4 पार्ट आएंगे। फर्स्ट पार्ट एट x इक्वल्स टू π/12, वी गेट π/12 प्लस √3/2। सेकेंड पार्ट 5π/12, इसमें आपको 5π/12 माइनस √3/2 मिलेगा। सिमिलरली -π/2 पे आपको -π/2 -1, और x इक्वल्स टू π/2 पे आपको मिलेगा π/2 -1। तो चारों पार्ट देखने के बाद हम इजिली वेरीफाई कर सकते हैं जो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है फंक्शन की, वो आपका √3/2 प्लस π/12, विच मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट वेरी इजी है बिकॉज हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 85 में चेक कर चुके हैं। तो जो लीस्ट वैल्यू देगा वो देगा -π/2 -1 पे, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस π/2, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे बेस है। क्वेश्चन में पूछा है द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इक्वल टू kx एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू k। k का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, और जो एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड लाइन गिवन है वो दिया है आपको 4/3 स्क्वायर यूनिट। लेट्स टॉक अबाउट आवर सॉल्यूशन पार्ट। तो यदि हम सॉल्यूशन पार्ट की बात करें, यहाँ पे ग्राफ में हम इजीली देख सकते हैं जो पैराबोला है और एक लाइन x इज इक्वल्स टू k के बीच हमें बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। जो एरिया उसने ऑलरेडी दिया है 4/3, बट यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास लिमिट दिया हुआ है 0 से k, और फॉर्मूला होता है a टू b y dx। तो हमें कर्व से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो y की वैल्यू हमें मिलेगी √k √x। y भी मल्टीप्लाई 2, बिकॉज जैसा कर्व x एक्सिस के अबव है ऐसा ही कर्व x एक्सिस के बिलो है। सो अबाउट if we talk about symmetric, so we need to multiply by 2. After solution part, √x का derivative is, √x का integration is 2/3 k raised to 3/2. After putting lower limit and upper limit, we get k is equals to 1. So your option number B is correct. Now comes to next part. Next part is से ही connect है 88.
88 में पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला बाउंडेड बाय द लेटर सेक्टम। तो लेटर सेक्टम आपको मिल चुका है k इक्वल्स टू 1, तो हम लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं 0 to 1। लिमिट रिप्लेस करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो 4/3 स्क्वायर यूनिट होगा। वी ऑलरेडी फाइंड आउट in previous question number 87 is already mentioned 4/3 square unit, बट हमें केवल यही वेरीफाई करना था ये k है, k की वैल्यू क्या रहेगी। So now comes to question number 89. Question number 89 is very easy question if we talk about, because it is based on differential equation, order and degree. तो क्वेश्चन नंबर 89 में आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री के बारे में पूछा है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री फाइंड आउट करने से पहले हम इसको एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। सो dy बाई डी एक्स वुड बी y अपॉन वाई क्यूब माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमें इजिली दिख रहा है d का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, सो विच मीन्स ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री डी की हाईएस्ट पावर का ही कोफिशिएंट हमें लेना होता है डिग्री फाइंड आउट करने के लिए, दिस इज ऑल्सो 1। सो योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में आपसे पूछा है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले हमें देखना है कि ये किस मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो। तो यदि हम बात करें ये डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट करने के बाद हमें मिल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं p का वैल्यू 1/y है और q का वैल्यू y स्क्वायर है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होता है जिसका फॉर्मूला होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dy। सो 1 अपॉन dy 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन होता है ln y और e रेज टू ln y इज इक्वल्स टू y। सो आवर सॉल्यूशन पार्ट वुड बी x इंटू if इज इक्वल्स टू q इंटू if dy प्लस c। सो if आपको y मिला है, सो सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर डी वेरीफाई करेगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बिकॉज दिस इज अ बेस ऑन डेफिनिट इंटीग्रल। सो 91 क्वेश्चन में आपसे पूछा है fx इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 to 2 fx dx इक्वल टू। तो यदि हम इसका सॉल्यूशन पार्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या मिलेगी आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें मिला 2 और -1। तो यदि हम इसको वेव कर्व मेथड से बात करें तो हमें मिल रहा है ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज 0 से 2 की बात यदि मैं बात करूं तो 0 से 2 में ये आपको वैल्यू नेगेटिव दे रहा है। तो 0 से 2 में हम मॉड को रिमूव करेंगे तो हमें नेगेटिव साइन लेना होगा। तो यदि हम नेगेटिव साइन की बात करें तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का x³ 3 x का x² 2 माइनस 2x, लोअर लिमिट आपके पास 0 है, अपर लिमिट 2 है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच करेगा, विच मींस 10/3। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 भी सेम है, बट क्वेश्चन नंबर 92 में आपका जो लिमिट है वो डिफरेंट दिया हुआ है। लिमिट है 1 से 3 बट फंक्शन इज सेम। तो यहां पर यदि हम प्रीवियस पार्ट की बात करें सॉल्यूशन की तो हमें इजीली दिख रहा है कि 0 से 1 पे तो ये आपको पॉजिटिव दे रहा है, बट जैसे ही 2 से इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा। सो विच मींस वी कैन टेक एज 1 से 2 negative sign as a mod and 2 to 3 we can take as a positive sign. So after solving this integration we get 3, which means your option number B is correct. Now comes to question number 93. 93 क्वेश्चन में आपसे पूछा है दो फंक्शंस आपके पास गिवन है। एक फंक्शन है f of t which means ln t bracket t plus under root 1 plus t square and g of t is connected with tan f of t। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट पूछा है f of t is an odd function, g of t is an odd function and which of the statement given above is are correct। यदि हम सॉल्यूशन पार्ट की बात करें तो हमें चेक करना है कि फंक्शन ओड है या फिर इवन है। ओड और इवन चेक करने के लिए हमें x के प्लेस पे -x सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास x के प्लेस पे t लिखा है तो हम इस फंक्शन को चेक करने के लिए t के प्लेस पे -t सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यदि हम t के प्लेस पे -t
टी सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा ln ब्रैकेट माइनस टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों एफ ऑफ टी और एफ ऑफ माइनस टी को यदि हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रहा है लॉग का, विच मीन्स ln m प्लस ln n is equals to L m into n. So after solving this part we get log 1 और log 1 का वैल्यू होता है 0, तो हमें इजिली हम वेरीफाई कर सकते हैं f of t is equals to माइनस f of माइनस t। तो आपका जो फर्स्ट फंक्शन है वो ओड फंक्शन है। यदि आपका फर्स्ट फंक्शन ही ओड फंक्शन है तो यदि हम 10 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो फंक्शन भी हमारा ओड फंक्शन ही काउंट किया जाएगा। So which means our statement first and statement second both are correct. So your option number C is correct for question number 93. Now comes to question number 94. 94 सबसे easy है, लेकिन ये तभी वेरीफाई किया जा सकता है जब आपको पता हो कि g of t फंक्शन कैसा है। तो हम यदि प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी होता है डेफिनेट इंटीग्रल में माइनस a to a fx dx is equal to 0 if fx is an odd function। और हम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 93 में ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि जो आपको g ऑफ t फंक्शन दिया है वो ओड फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी वी कैन इजीली राइट इज इक्वल्स टू 0। सो योर ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्वेश्चन में आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन है। f of 0 का वैल्यू -1 दिया है, f dash 0 is 1, hx is equals to f ब्रैकेट 2fx plus 2 और gx is hx the whole square। तो आपको h dash 0 फाइंड आउट करना है। तो h dash 0 फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले hx का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो hx का डेरिवेटिव fx का डेरिवेटिव होगा आपका f dash x, और whatever written in place of x you need to again derivative। So 2fx plus 2 का यदि हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा 2f dash x, और 2 का डेरिवेटिव एज अ कांस्टेंट वी कैन कंसीडर एज 0। सो वी नीड टू इवेलुएट वैल्यू ऑफ h dash 0। सो h dash 0 फाइंड आउट करने के लिए आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें x के प्लेस पे 0 सब्सटीट्यूट करना है। तो यदि हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, f of 0 का वैल्यू आपको 1 दिया है, सॉरी -1 दिया है, सो -1 into 2 we get -2। so according to this option number A is correct। so now comes to question number 96। 96 भी सेम है, उसी पैटर्न पे है। तो हमें यहाँ पे भी g डैश x फाइंड आउट करना होगा, और g डैश x इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं x रेज टू n के फॉर्मूले से। सो 2hx और hx का डेरिवेटिव h डैश x। g डैश 0 फाइंड आउट करने के लिए आपको x के प्लेस पे 0 सब्सटीट्यूट करना होगा। सो फाइनली वी गेट 4। सो योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 96। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 97। 97 में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, बट आपको इसका प्रॉपर्टी यदि पता है तो आप इसको डायरेक्ट इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन पार्ट में आप देख सकते हैं आपको fx की वैल्यू sin x दिया है और gx का वैल्यू sin x प्लस cos x प्लस 1 दिया है। तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि आपको 0 to π/2 1 ओवर sin x प्लस cos x प्लस 1 dx दिया जाए तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ब्रैकेट 1 प्लस tan x/2। तो यदि हम डायरेक्ट इसका रिजल्ट यदि हमें पता है तो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट रिप्लेस करेंगे 0 से π/2, वो तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा log 2। सो log 2 इज योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो ln 2 के साथ आप जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे log मेंशन किया है विच इज एज कॉमन log, बट इन अवर ऑप्शन नेचुरल log इज गिवन। सो क्वेश्चन नंबर 97 का आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, वो यूज करेंगे। सो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दोनों लिमिट का सम -x हमें रिप्लेस करना होता है x के प्लेस पे, जो हमने मेंशन किया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन के साथ। सो sin π/2 -x cos π/2 -x वी गेट cos x अपॉन cos x प्लस sin x प्लस 1। यदि हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो वी गेट 2i इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, and in denominator cos x
प्लस साइन एक्स प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में +1 एक्स्ट्रा दिया है तो हम +1 और -1 को अलग से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यदि हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 को सेपरेट डिवाइड करते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 से, सो वी गेट 1। एंड इफ वी टेक -1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू आया है ln2। तो यदि फाइनल आंसर की बात करें, हमें 2 से डिवाइड करना होगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/4 माइनस ln2/4 आएगा। ठीक है, सो योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 99 और 100 थोड़ा सा ज्यादा लेंथी है। इस क्वेश्चन को भी यदि किसी स्टूडेंट को फॉर्मूले लर्न है तो ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। लेट्स स्टार्ट विद अवर सॉल्यूशन पार्ट, जो हमने सॉल्व किया है उससे देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अंडर रूट में हमारे पास लिखा हुआ है x² + 1, तो हम ट्राई करेंगे कि न्यूमरेटर में भी कुछ ऐसा ही बना पाए। तो हम इस क्वेश्चन में +1 और -1 करते हैं तो हमें फाइनली x² + 1 -2 मिलेगा। तो अब x² + 1 को √x² + 1 के साथ रखेंगे तो आपको √x² + 1 मिलेगा। और यदि आप न्यूमरेटर 2 अपॉन √x² + 1 को सेपरेट करेंगे तो हमें 2 × 2 4 टाइम्स 1 अपॉन x² + 1 मिलेगा। तो हमें यहाँ पे दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, √x² + a²। इसका फॉर्मूला होता है 1/2x √x² + a² + a²/2 ln mod x plus √x² + 1। और जो सेकंड फॉर्मूला है 1 अपॉन √x² + a², वो फॉर्मूला होता है आपका ln mod x plus √x² + a²। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको जो a की वैल्यू दी है वो वैल्यू यहां पर आपको दी हुई है 1, बिकॉज 1² को आप 1 लिख सकते हैं। तो a जो मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है उसके प्लेस पे यदि a के प्लेस पे आप 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है वो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यदि हम वेरीफाई करें अकॉर्डिंग टू योर गिवन क्वेश्चन, तो आपका जो u(x) की वैल्यू है वो x आ रही है और v(x) की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √x² + 1। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि u²x माइनस v²x का मोड क्या होगा। तो यदि हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर इज x और v(x) का स्क्वायर इज x² - 1। तो -1 मॉड्यूलस में आपको वैल्यू देता है +1। सो योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन 100 में आपसे दोनों का प्रोडक्ट पूछा है तो इजीली आप ux और vx क्वेश्चन नंबर 99 में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ऑप्शन आपको ए ऑप्शन आपका वेरीफाई होगा, बिकॉज यदि आप ऑप्शन ए से x² कॉमन लेंगे तो आपको x √x² + 1 मिलेगा। ओके, थैंक यू। So let's start with question number 101. Question 101 में there are two equations, line of regression x minus 3y plus 4 equals to 0 and 2x minus 7y plus 8 equals to 0. If byx and bxy are regression coefficient, we also know that of lines of regression of y on x and x on y. So we need to evaluate for this question value of bxy and 7 times byx. So if we take about solution part, so as you know, if we take x is equals to 3y minus 4, this is your x on y equation. So your bxy is the coefficient of y. So and similarly, if we take 7y equals to 2x plus 8 is y on x and coefficient of x is your byx. So if we multiply 7 times of byx, we gives 2 and 2 plus 3 gives 5. So your option number D will satisfy this equation. बट ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि which equation is x on y and which equation is y on x. For that type of question, you need to remember कि value of r square is less than 1. So now comes to question number 102. In question number 102 gives the mean of n observation 1, 4, 9, 16 up to n square is 130. What is the value of n?
So if we talk about our solution part, mean formula is summation x is equals to 1 to n x squared divided by n. So your value of mean is 130 and your x is first n natural number के square का sum is directed formula as n plus 1 2n plus 1 by 6. So if we cut n with n, so our numerator part will become n plus 1 2n plus 1 by 6. If we cross multiply by 6 with 130, we get n plus 1 2n plus 1 equals to 780. तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. यू कैन अप्रोच डायरेक्टली विद ऑप्शन. सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ओनली n is equals to 19, which is option B, will satisfy n plus 1 2n plus 1 is equals to 780. So option B is your correct option for question number 102. Now comes to question 103. Question 103 said 3 distinct natural numbers are chosen at random from 1 to 10. What is the probability that they are consecutive? So 3 consecutive natural number 1 to 10 are 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8 7 8 9 8 9 10. So only there are 8 favorable case when 3 distinct natural numbers 1 to 10 are consecutive. बट यहाँ पे हमारे पास 10 नेचुरल नंबर्स है और हमारे पास 10 नेचुरल नंबर में से 3 नंबर चूज करने हैं. सो योर total case would be 10C3. If you solve 8 divided by 10C3, it gives 1 by 15. So your option number C is correct. But यहाँ पे आपको option B is mentioned किया हुआ है. So you can correct yourself. So option B is correct. Now comes to question number 104. So 104 में A, B and C are 3 mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment. 3 times of probability of B is equals to 4 times of probability of A, and 3 times of probability of C is equals to 2 times of probability of B. We need to evaluate probability of A. So let probability of B is x. So sum of all probability would be 1. As we know कि जितनी भी probabilities होती हैं उन सबका sum होता है 1 के इक्वल. So probability of A की वैल्यू आपको 3x by 4 मिलेगा. सेम probability of B हमने x कंसीडर किया है. probability C is 2x by 3. तो हम यहाँ से x की जो वैल्यू है वो इवेलुएट कर सकते हैं. आपको x का वैल्यू मिलेगा 12/29. बट PA की वैल्यू is 3 by 4 times x. So if we multiply 3 by 4 with 12 by 29, we get 9/29. So 9/29 is your option number C, which is absolutely correct. Now comes to question number 105. In 105 question, a die has 2 faces with number 4, 3 faces with number 5, and 1 faces with number 6. If the die is rolled once, then what is the probability of getting 4 and 5? यदि हम इस सॉल्यूशन की बात करें, जो नंबर 4 आ रहा है वो 2 फेसेस में है, 5 नंबर इज 3 फेसेस, 6 नंबर इज 1 फेसेस. So probability of getting 4 and 5 is 2 by 6 plus 3 by 6. So which gives 5 by 6. So your option number 6 is correct for question number 105. Now comes to question number 106. 106 क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक बॉक्स कंटेन 2 blacks, 4 yellow and 6 white balls. 3 balls are drawn in succession with replacement. What is the probability that all 3 are of the same color? तो यदि हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 2 ब्लैक, 6 येलो और 4 येलो एंड 6 व्हाइट बॉल. 3 बॉल्स को हमें फाइंड आउट करना है इन सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट.
और प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है सेम कलर का होना चाहिए. सो वी कैन कंसीडर एज 3 केसेस. केस फर्स्ट, पहला बॉल भी व्हाइट है, सेकंड बॉल भी व्हाइट है, थर्ड बॉल भी व्हाइट है. सेकंड केस कैन बी येलो येलो येलो, एंड लास्ट केस इज black black black. So if probability of white ball is 6 by 12, same for second case, because replacement is allowed. Second case is similar for 6 by 12, third case is also 6 by 12. So probability when all three balls are same color as a white, so our final probability is 6 by 12 the whole cube, same as for yellow 4 by 12 ka whole cube, and same for black 2 by 12 ka whole cube. After solving this condition, we get 1 by 6. So option A is correct for question number 106. Now comes to question number 107. In 107, a can hit a target 5 times in 4 shot, B can hit 4 times in 5 shot, can hit 3 times in 4 shot. What is the probability that A and C may hit but B may lose? So there are condition which we apply for this question is A का probability आपको 5 by 6 दिया है, B का probability आपको 4 by 5 is 3 by 4. We need to find out for this question is A or C may hit but B may lose. So we can evaluate probability of A, C, but B will not happen. So probability of A is 5 by 6 into probability of C is 3 by 4, but we can easily calculate of when probability of B bar. Probability of B bar is 1 minus 4 by 5. So after solving this calculation, we get 1 by 8. So 1 by 8 is your option number A. So for question number 107, option A is correct. Now comes to 108 question. 108 question में आपको एक word दिया है zoology and are arranged in the all possible ways. What is the probability that the consonant and vowels occur alternatively? So there are there are 3 vowels and there are 4 consonant. So if consonant and vowels occur alternatively, so there are 3 vowels, so we can arrange as factorial 3, but all 3 letters are repeated. So we use in denominator factorial 3. But there are 4 consonants, so consonants are 4, so we can arrange as factorial 4. So this is your favorable case. Now comes to total number of cases. So there are 7 letters, but 3 letters are repeat. So total number of arrangement is 7 factorial divided by 3 factorial. After solving this factorial part, we get 1 over 35. So 1 over 35, option D will satisfy for question number 8. 108. So now comes to question number 109. Question 109 में आपसे पूछा है एक natural number x is chosen at random from the first 100 natural numbers. What is the probability that when x square plus x is greater than 50? So first 100 natural numbers से यदि आप x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 चूज करेंगे तो ये ईच वैल्यू आपको जो गिवन इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी. सो देयर आर टोटल 100 नेचुरल नंबर्स, तो उन 100 नेचुरल नंबर्स से यदि हम वो 6 नेचुरल नंबर्स को रिमूव करते हैं, सो वी हैव 94 फेवरेबल केस एंड टोटल केस इज 100. सो आवर फाइनल आंसर वुड बी 47 by 50. So 47 by 50 is your option number B is correct for question number 109. Now comes to question number 110. So if we talk about 110th question, what is the mean deviation of first 10 natural numbers? So mean deviation of first 10 natural number
फाइंड आउट करने से पहले हमें मीन फाइंड आउट करना होगा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का. सो बेसिकली फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर इन एपी. सो इफ numbers are in AP, so we can calculate mean using formula first number plus last number divided by 2. So our first number is first, last number is 10, so our mean is 5.5. So now we can calculate mean deviation. So mean deviation about mean is you need to subtract 5.5 from each natural number from 1 to 10. So 1 minus 5.5 same as 2.2 minus 5.5, similarly till 10 minus 5.5. After solving this, we get 25 and divided by total natural numbers are 10. So 25 by 10 gives 2.5. So this is option B will satisfy for question number 110. Now comes to question number 111. 111 क्वेश्चन में आपको समेशन I is equals to xi स्क्वायर का समेशन till 1 to 9 is 855. आपसे पूछा है if m is the mean and sigma is the standard deviation of x1 to x9, then what is the value of mean square plus sigma square? So we know that sigma square is summation x square upon n minus mean the whole square. So mean square plus sigma square के प्लेस पे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका जो मीन स्क्वायर की वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. नाउ रिमेनिंग टर्म इज समेशन xi स्क्वायर. समेशन xi स्क्वायर आपको 855 क्वेश्चन में गिवन है and total numbers are 9. So if 855 divided by 9, they gives 95. So option B will satisfy for question number 111. Now comes to our next question 112. 112 में आपको दिया है mean of series x1 to xn is x bar. If xn is replaced by k, then what is the new mean? तो हमें पता है कि यदि जनरल फॉर्मूला टू इवैल्यूएट मीन इज समेशन xi अपॉन n, सो वी कैन इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट वी गेट समेशन xi इज इक्वल्स टू n x बार. यदि हम xn को रिप्लेस करते हैं k से तो हमें xn को सब्ट्रैक्ट करना होगा और k को ऐड करना होगा. तो अवर न्यू मीन वुड बी n x बार माइनस xn प्लस k, बट टोटल नंबर ऑफ data would be also n. So our option D will satisfy for question number 112. Now comes to question number 113. So in 113 question, a fair coin is tossed till two heads occur in succession. What is the probability that the number of tosses required is less than 6? So coin is tossed till two heads occur in succession. So number of tosses required is less than 6. So there are 4 cases: 2 coins, 3 coins, 4 coins, and 5 coins. So 2 coins, there is only possibility head, because if 2 heads will come, then no other toss requirement. But our second case is 3 coins. If we take 3 coins, our first toss, after first toss, our result should be tail and remaining 2 can be head. Same, our third case, there are 4 coins. So there are 2 cases when head tail, another remaining head, and second case for 4 coins, tail, head. बिकॉज आपको क्वेश्चन में बोला है पेयर कॉइन इज टॉस्ड टिल टू हेड्स इज अकर इन सक्सेशन. तो यदि आपका फर्स्ट टॉस में हेड आता है, सो यू हैव अनदर चांस, यू कैन टेक एज टेल, बट अनदर रिमेनिंग 2 कैन बी आवर हेड पार्ट. सो इफ वी टॉक अबाउट 5 coins, so head
there are three cases. First case, first head, second tail, third tail, but remaining two can be heads. Same for second case, आपको tail आना चाहिए, फिर head आना चाहिए, फिर tail, but last two could be your head. And last part is तीनों tail होंगे और last के दो head होंगे. सो 2 कॉइन के केस में आपका जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो 1/4, बिकॉज हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, सो 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4. सेम इज 3 कॉइन्स. यदि आपको 3 कॉइन्स की रिक्वायरमेंट है, सो देयर आर 1/2, 1/2, 1/2, विच मीन्स 1/8. बट 4 कॉइन के लिए देयर आर 2 सेपरेट केसेस. सो 4 कॉइन्स के लिए प्रोबेबिलिटी इज 1/16, बट देयर आर 2 केस. So we need to multiply 2 into 1/16. Same as 5 coins, there are 3 cases. Each case is probability 1/32, but there are 3 cases. So we need to multiply by 3/30, 1/32. After solving these cases, we get probabilities 19/32. So option number D will satisfy. Now comes to question number 114. In question 114 में आपके पास एक बॉक्स है जिसमें कंटेन करता है 2 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल. सेकंड बॉक्स में आपके पास 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स है और क्वेश्चन में बोला गया है एक बॉल ट्रांसफर की गई है फ्रॉम बैग ए टू बैग बी, देन ए बॉल इज ड्रॉन आउट ऑफ बैग बी. What is the probability that ball is white? यानी आपको फाइंड क्या करना है, जो आपने बॉल ड्रॉन की है बैक सेकंड में से वो आपका व्हाइट होना चाहिए. सो हम कंसीडर करते हैं केसेस. अर्न ए में आपके पास 2 व्हाइट 2 ब्लैक हैं, अर्न बी में 2 व्हाइट 3 व्हाइट 2 ब्लैक है. सो यदि आप 1 बॉल ट्रांसफर करते हैं ए से बी में, देन बॉल इज ड्रॉन आउट ऑफ बी. सो देयर आर 2 केसेस. फर्स्ट बॉल यदि हमने ड्रॉन किया तो वो व्हाइट हो सकता है, बट जो आपको सेकंड बॉल ड्रॉन करना है वो भी व्हाइट होना चाहिए. सो केस फर्स्ट कैन बी व्हाइट इनटू व्हाइट. सेकंड केस आपका, यदि आपने फर्स्ट बॉल ड्रॉन की ब्लैक, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट केस सेकंड में आपकी जो प्रोबेबिलिटी है जिसको आपको फाइंड करना है वो बॉल कैसा होना चाहिए, व्हाइट. सो देयर आर 2 केसेस. सो यदि हम बैक फर्स्ट में से व्हाइट बॉल निकालते हैं तो probability is 2/4, but after transfer white ball would be 4. So there are 4 divided by 6. Plus यदि हम फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल निकालते हैं तो probability is 2/4, but जब हम ब्लैक बॉल ट्रांसफर करते हैं सेकंड बैग में तो अवर व्हाइट बॉल की probability, व्हाइट बॉल आपके पास 3 रहेगा. So 3/6 is your probability from bag second. If we solve this part, 8/24 plus 6/24, and your final value is 14/24, which gives 7/12. So your option B is correct. Now comes to question number 115. 115 में आपको probability of A और probability of A by B, which is known as conditional probability दिया है. आपसे पूछा है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है. तो उससे पहले हम जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से हम पी बी बाय ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पी बी बाई ए 0.5 दिया हुआ है. तो पी बी बाई ए अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला बनेगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए, विच गिव्स 0.5. तो हमें यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मिलेगा जो आपको 0.125 देगा. इसकी हेल्प से हम पी बी की वैल्यू भी इवेल्युएट कर सकते हैं. पी बी इज इक्वल्स टू 0.125 divided by 0.25, because we already find out the value of P A intersection B with help of P B by A. So A और B इंडिपेंडेंट इवेंट तब होते हैं जब P A इंटू P B का वैल्यू P इंटरसेक्शन B के इक्वल है. तो हमें सॉल्यूशन पार्ट में इजीली दिख रहा है कि P A और P B आपको P इंटरसेक्शन B के इक्वल है.
यदि हम केस सेकंड की बात करें तो डी मॉर्गन्स लॉ से P इंटरसेक्शन P A dash union B dash can be written as 1 minus P intersection B, which gives 0.875. This is also correct according to our question. If we check case third, P intersect A dash intersection B dash is also written as 1 minus P A union B. So P A union B का यदि हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P A plus P B minus P intersection B, तो आपको आंसर मिलेगा 0.625 and 1 minus 0.625 gives 0.375. So according to our solution part, our all options are correct. So option D is correct answer for 150. Now comes to 116th question. In 116, there are two perfect dice are thrown. What is the probability that the sum of the numbers on the faces is neither 9 nor 10? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक ट्रिक एक्सप्लेन कर रहा हूं. दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट. यदि आपको टू डाइस को थ्रो करने पर सम n मिल रहा है, तो आपके जो आउटकम्स आते हैं, देयर आर टू आउटकम्स. यदि सम आपको 2 to 7 की रेंज में मिल रहा है, या 2 भी रहे 7 भी रहे, तो नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास n-1 होंगे. यदि आपका सम 8 to 12 आ रहा है टू डाइस को रोल करने के बाद, तो आपका नंबर ऑफ आउटकम ऑलवेज 13-n. तो हमें क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ नंबर्स ऑन द फेसेस इज नाइदर 9 nor 10. तो हम किस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी विच मींस 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, मतलब 9 आपका कंसीडर किया जा रहा है सेकंड केस में. तो 13-9 आउटकम इज 4. सो 4/36 प्लस सेम एज 10. 13 minus 10 gives 3. So 3/36. If we solve, we get 1 minus 7/36. तो 1 minus 7/36 आपको आंसर देगा 29/36, जो आपका ऑप्शन डी वेरीफाई करेगा. सो आपको आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 117 में आपको क्वेश्चन में बोला गया है द अकरेंस ऑफ अ डिजीज इज एन इंडस्ट्री इज सच दैट द वर्कर्स हैव 20% चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट. What is the probability that out of 6 workers chosen at random, 4 or more will suffer from the disease? तो ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस है. तो आपको क्वेश्चन में n की वैल्यू 6 गिवन है, p is 20%. तो 20% कैन बी सॉल्व एज 1/5, बट q आप 1 minus p की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपको 4/5 देगा. क्वेश्चन की लास्ट लाइन से हमें पता लग रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन 4 और मोर विल सफर फ्रॉम द डिजीज. सो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर और इक्वल टू 4 मींस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 4, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 5 एंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 6. तो आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का यूज करके फॉर्मूले को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है px इज इक्वल्स टू r का फॉर्मूला होता है NCR P raised to R Q raised to n minus R. तो यदि आप ये वैल्यू को सेटिस्फाई रिप्लेस करेंगे P, Q, R और N की वैल्यू, तो आपको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन A वेरीफाई होगा, जो आपका 53/3125 है. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 118. 118 में बोला है आपको 3 परफेक्ट डाइस आर रोल अंडर द कंडीशन no two show the same face. What is the probability that one of the faces shown is an ace? तो there are 3 dice यहां पे हमने रोल किया है, कोई 2 shows सेम नहीं आना चाहिए. तो इसका मतलब क्या एक्सप्लेन करना चाहता है क्वेश्चन में आपको समझना है कि यहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है. तो यदि आप 3 परफेक्ट डाइस रोल करेंगे, तो जो फर्स्ट डाइस होगा उसमें आप 6 के 6 वेज आपके पास, आप 1 2 3 4 5 6 आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो देयर आर 6 वेज, बट सेकेंड टाइम आपके पास 5 वेज रहेंगे,
बिकॉज रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एंड थर्ड डाइस के लिए आपके पास 4 वेज आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपको मिलेंगे 120 वेज। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द फेस शोन इज एन एस। सो देयर आर 3 केसेस एंड एस इज ओनली 1। सो आवर फेवरेबल केस इज 3c1 into 5 into 4 divided by 120. So our final answer would be 1/2. Got it? So now question number 18, option D will verify. Now comes to question number 119. 119 में आपके पास 3 परफेक्ट डाइज हैं जिसको रिप्रेजेंट किया उसने D1, D2, D3 से, और XYZ रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर D1, D2, D3। सो आपसे पूछा है पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, बट कंडीशन यहां पे दिया है x छोटा होना चाहिए y से, z इज लेसर देन y इज लेसर देन z। सो आप यहाँ पे डिफरेंट केसेस पे डिस्कस करने वाले हैं। सो केस 1 में यदि हम 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 कंसीडर करते हैं तो जो थर्ड पोजीशन है उस पे 4 केसेस बन सकता है। आपका 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। सो देयर आर 4 केसेस। यदि हम 1 और 3 को कंसीडर करते हैं तो आपके पास आप उस पोजीशन पे 4, 5, 6 3 नंबर फिल कर सकते हैं। बट यदि हमारा केस 1, 4 है तो उसमें केवल 5 और 6 पॉसिबल है। यदि हमने 1, 5 कंसीडर किया है तो आपका केवल 1 केस कंसीडर किया जाएगा जो आपका 6 रहेगा। सो देयर आर 6 केसेस। यदि हम 2, 3 लेते हैं तो उसमें हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। यदि हम 2, 4 लेते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी है। यदि 2, 5 लेते हैं तो केवल 1 पॉसिबिलिटी होगी। तो इस केस में हमारे पास टोटल आउटकम्स यहां से हमें मिलेंगे 6। यदि हम पहली पोजीशन पे 3, सेकंड पोजीशन पे 4 रिप्लेस करते हैं तो हमें 2, क्योंकि 5 और 6 ही पॉसिबल है। यदि हम सेकंड केस लेते हैं 3 और 5 का तो उसमें हम केवल 6 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहां से हमें टोटल आउटकम्स मिलेंगे 3। यदि हमने x को y, x को 4 और y को 5 कंसीडर किया तो उसमें हमारे पास केवल एक आउटकम आएगा जो हम 6 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम की यदि बात करें तो 10 + 6 16 + 3 19 + 1 20। So there are 20 possible outcomes when condition x is greater than x is less than y less than z. So क्वेश्चन नंबर 119 का जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन ए सेटिस्फाई करेगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन 120 आपको बोला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन आपको दिया हुआ है 6, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है √2। आपसे पूछा है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द पेरीमीटर n एंड p। सो यदि हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पार्ट पे जाएं तो मीन हमें पता है np के इक्वल होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन √2 है तो वेरिएंस उसका स्क्वायर करने से हमें 2 मिल जाएगा। तो वेरिएंस होता है आपका npq। यदि हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हमें वहां से q की वैल्यू मिलेगी 1/3 और p की वैल्यू हम हेल्प ऑफ q 1 - q से निकाल सकते हैं, तो p आपको 2/3। यदि p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सेटिस्फाई करेंगे तो n आपको 9 मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू आवर सॉल्यूशन पार्ट ऑप्शन डी विल सेटिस्फाई। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 120 जो आपको ऑप्शन डी करेक्ट आंसर देगा। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन पार्ट फॉर NDA 2 2024 मैथमेटिक्स पार्ट। सो जय हिंद दोस्तों, आपने जितने भी आंसर्स है वो सब मैच किए। यदि आपको कोई करेक्शन है, लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, सो जस्ट आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।